Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Manopal, and this is the official launch video for Target J 2028 11 plus 12 batch 2. So, आज के वीडियो में I'm going to talk about the details of this batch. ये full syllabus batch है, full length batch है, in which I take you from complete 0 to JEE advanced level for J 2028. For those of you who do not know, I'm on my website vinayopal.com. So you can go and explore the website on your own. मैं यहाँ पर थोड़े मेरे qualifications वगैरह के बारे में है, some nice messages from top students for the last few years, and all the courses relevant to you that you can explore on my website, and और भी थोड़े कुछ चीज़ें हैं. So you can do that. इस वीडियो में I'm going to talk about specifically this batch 2 for J 2028. So मैं यहाँ पे view course click करने वाला हूँ, and I also encourage कि you also can go to my website and click on view course and go to this page for J 2028 batch 2. तो तुम्हें right hand side पर start a free trial option दिखेगा. You don't have to click on buy now या buy the course. Instead, click on start a free trial, so you will be able to see the contents of the course. Alright, so let me just go to the course page. So this is the course page for date 2028. यहाँ पे एक welcome message है, कुछ details के साथ, some important points. So the first chapter that we're going to start off with is going to be calculus. So calculus is going to start on April 24th. सो लेक्चर शेड्यूल एंड लेक्चर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ. सो द फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन फ्रॉम कैलकुलस. सो दैट लेक्चर आई हैव अपलोडेड इट फॉर फ्री. तो तुम्हें जो अप्रैल 24th को शुरू होने वाला है वो फ्रीली अवेलेबल है. यू कैन इमीडिएटली वॉच दिस लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर एनरोलिंग फॉर द फ्री ट्रायल. ऑलराइट, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ किस तरीके से टीचिंग स्टाइल, कंटेंट वगैरह, and see if it suits you. So the way the structure works, let me just go to batch 1 जहाँ पे already uploaded है ये modules and ये lectures, so वहाँ पे I'll be able to show you better. So here I'm just going to batch 1. Content is going to be identical in batch 1 and batch 2. It's just that batch 1 has started earlier, तो वहाँ पे और chapters already uploaded है, so I can show you कि किस तरीके से होगा. So हर chapter के start में एक module upload होगा यहाँ पे. So मॉड्यूल हैज़ डिफरेंट एक्सरसाइजेस एंड हर एक्सरसाइज का मैं सोल्यूशन बना के डालूंगा. ऑलराइट, मतलब हर होमवर्क प्रॉब्लम जो मैं दूंगा उसका सोल्यूशन बना के डालूंगा. सो लेक्चर 1 विल बी अपलोडेड फॉर बैच 2 ऑन 24th. तो उसके बाद आई विल गिव सम होमवर्क फ्रॉम माई मॉड्यूल एंड यू हैव टू सॉल्व दैट. देन कम टू द नेक्स्ट लेक्चर. उस लेक्चर को देखो, कुछ डाउट्स है तो पूछो, आई विल शो यू हाउ आई आंसर डाउट्स. एंड देन उसके बाद होमवर्क सॉल्व करो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. लेक्चर देखो, आस्क योर डाउट्स, आई टॉक अबाउट हाउ डाउट्स आर क्लियर्ड. लेक्चर देखो, आस्क योर डाउट्स, होमवर्क सॉल्व करो. कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन चेक द वीडियो सोल्यूशन. उसमें भी कुछ डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, नो इश्यूज एट ऑल. एंड ऐसे करते करते हम चैप्टर ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल हैव अ टेस्ट. सो हर चैप्टर के एंड में टेस्ट होगा. ऑलराइट, सो मॉड्यूल के बारे में हर चैप्टर के एंड में टेस्ट होगा, वो जेईई एडवांस लेवल का होगा. लेट मी जस्ट शो यू काइनेमैटिक्स इज अ बेटर एग्जांपल. एक्चुअली काइनेमैटिक्स पूरा ख़त्म नहीं हुआ है बैच 1 में, सो वहाँ टेस्ट इट्स नॉट अपलोडेड, बट लेट मी जस्ट शो यू काइनेमैटिक्स मॉड्यूल बिकॉज दैट इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स. सो जनरली 4 एक्सरसाइजेस में मैं डिवाइड करता हूँ मॉड्यूल को. एक्सरसाइज 1 इज सिंगल करेक्ट, एक्सरसाइज 2 इज 1 or more than 1 correct, exercise 3 is comprehension, passage type, match list, and exercise 4 is more of subjective, kind of like the questions that come for numerical or integer type in JEE Advanced. So the focus of this course is going to be JEE Advanced ultimately, and JEE Mains level जो है वो automatically cover हो जाता है. Students who study from my course consistently, sincerely, they find JEE Mains questions to be extremely easy. तो वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम कंप्लीट ज़ीरो. तुम्हें जो प्री रिक्विजिट्स आने चाहिए वो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर बेसिक 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है. दीज आर वेरी बेसिक स्टफ दैट यू शुड ऑलरेडी नो फ्रॉम योर 9th और 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. ऑलराइट, बाकी और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ मैं. बिल्कुल फिजिक्स एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें पता होगा. इनफैक्ट स्कूल में काफ़ी बार फिजिक्स में बहुत कन्फ्यूजिंग एंड गलत चीज़ें भी पढ़ा देते हैं. इट्स बेटर इफ़ यू डोंट नो एनी फिजिक्स, दैट इज़ better for me.
to teach you from complete zero and in a proper manner. Alright, so the lecture flow is going to be this way. Module will be uploaded, module and the solutions to each exercise will be uploaded at the top of the chapter, like जैसे यहाँ पे kinematics में मैंने किया है. And then lecture 1, so I have divided lectures into 2 or 3 parts just for ease of viewing. Students को easy होता है देखने में छोटे छोटे parts में, छोटे मतलब half an hour generally parts में. So the lecture length would be on an average 1 hour. कभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कभी थोड़ा कम हो सकता है, but on an average the lecture length would be 1 hour. Now 1 hour देखने में generally students will, in my experience, take 2 hours. The reason is कि कहीं I'll ask you to pause the video and solve the question that I've given in the lecture. So you have to pause it and try it out. Alright, so 2 घंटे लग जाएंगे. And homework solve करने में starting में तो नहीं, but आगे के chapters में as we go further in the syllabus, homework solve करने में शायद 1.5 से 2 घंटा लग सकता है. So मान के चलो कि हर lecture के लिए 4 घंटा you will have to devote. Alright, which is very efficient. So 4 hours per lecture, and we are going to have JEE 2028 batch 2 के लिए we are going to have lectures every alternate day until we catch up with batch 1. And एक बार once we are on par with batch 1, उसके बाद फिर batch 1 के schedule से जाएंगे, which is Monday, Wednesday, Friday, 3 lectures per week. Alright. So starting में you might have to give around 12 to 14 hours per week on an average, which should be very doable. And उसके बाद then it'll reduce to 12 hours per week. मतलब 3 lecture होंगे तो 12 घंटे. Once we catch up with batch 1. Alright. So it's a very structured course. All you have to do is watch my lecture, ask doubts, solve homework, ask doubts, look at the video solution if you don't get anything, ask doubts if you don't understand the video solution, and then give the test and analyze. So test में भी अच्छे से analysis वगैरह होता है. Alright. So this is the flow that we're going to go. And batch 2 में मैंने schedule कर लिया है kinematics तक के. आगे of course I'll keep on uploading. ऐसा मत सोचना कि बस इतना ही lectures upload किया है, ऐसा नहीं है. Of course lectures will continue to get uploaded. So जैसे कि kinematics is going to end on June 7th. Alright, and then उसके बाद Newton's laws will start and so on. So let me show you how doubts are cleared. Let me just go to batch 1. So कोई भी video है, when you're watching a video and you get a doubt, all you have to do is pause the video and type in your doubt here. ये जो post discussion button है वो press करने पे the doubt will appear with the exact timestamp जहाँ पे तुमने video pause किया है. So I know exactly in which context you have asked the doubt. Alright, and then I will reply to it, and एक thread शुरू हो जाता है in which we can have a conversation back and forth. So I will ensure that your doubt is cleared, and you are free to ask me as many doubts as you want. 100% doubt clearance by me from my end. 100% means 100%. I clear each and every single doubt, and you can keep asking me until you are satisfied. Alright, so for example, Ishan has asked a doubt at 10 minutes 26 seconds. कुछ उसने doubt पूछा, I answered it and he understood. So it's like a nice back and forth conversation. Alright, and I clear doubts very frequently. So I have cleared tens of thousands of doubts using this platform. बहुत ही efficient तरीका है, बहुत ही organized and structured तरीका है to keep track of your doubts instead of having WhatsApp groups or Telegram groups जहाँ पे सबके doubts एक साथ आ जाते हैं, miss out हो जाते हैं. ऐसा नहीं है, यहाँ पे एकदम structured है and everyone gets their doubts cleared. And if you know anyone who is already enrolled in my courses, maybe your seniors, they will confirm this statement from me कि I clear 100% doubts. Okay, so doubt clearing is extremely efficient. So the course flow is exactly the way I said. Lecture देखना है, doubt clear करना है, doubt clearing मैंने बता दिया है किस तरीके से होता है. Alright. So course syllabus वगैरह कब खत्म होगा? The syllabus we expect that it will get over in probably August 2026, July maybe, sorry 2027, July August 2027. उसके बाद you will automatically get enrolled in the crash course. So that is free, included for free in this batch, both batch 1 and batch 2. And you will automatically get enrolled in the crash course जहाँ पे अलग से homework दिया जाएगा उसमें and tests भी होंगे. So it's a complete package that you're getting in this course, completely self-sufficient, पूरे zero से JEE advanced level तक, and मैं तुम्हारे साथ रहूँगा पूरे journey में, clearing all your doubts, answering anything that you have to ask. कोई non-physics doubt है तो भी तुम मुझे email कर सकते हो.
तो मतलब मैं मेंटरशिप भी दे देता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, कुछ भी हेल्प चाहिए रहता है, माई स्टूडेंट्स आर ऑलवेज फ्री टू ईमेल मी एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प देम। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें the homework is not just given from a module but also from books like Shashi Bhushan Tiwari, which is more popularly known as SBT. The SBT के problem books है which are very which have very good level problems, and Irodov से भी दूंगा मैं. Irodov is another good book with good level questions. So we are preparing for JEE Advanced, so we will be solving JEE Advanced level questions as well, especially from these books. So उन जो भी मैं homework दूंगा उनके भी solutions मैं बनाऊंगा. Alright, so whatever homework I give you in this full course, I will give you a video solution for it as well. So you never have to go, you never have to think कि इसका solution कहाँ मिलेगा, मेरे पास मिलेगा. और कहीं भी कुछ भी doubt है तो you are always free to ask me. Alright, I'm always available. So this is the way the flow, the structure is, the course is going to flow. And इसमें एक game changer shortcuts भी है. यहाँ पर 2028 batch 1 में uploaded है already, which you will require after Newton's laws begins, after the next chapter begins. So 2028 batch 2 में बाद में upload होगा. So game changer shortcuts are some shortcuts that have some unique techniques that I have come up with. Most of them I have come up with myself. So बहुत लोगों को नहीं, majority लोगों को नहीं पता है, but they are very efficient and I will actually show you how to solve high level questions in a very fast manner. Okay, so ये game changer shortcuts are included for free in this course and I will actually tell you कब क्या वीडियो देखना है. So जैसे न्यूटन लॉज जब चैप्टर आएगा उसमें मैं बताऊंगा लेक्चर 4 के बाद इन न्यूटन लॉज 1 NLM 1 फाउंडेशन ऑफ द फ्लूइड मेथड देखना, फ्रिक्शन पढ़ने के बाद ये वाला मेथड देखना. तो जब तुम स्टार्टिंग में ही चैप्टर पढ़ रहे हो वहीं पर तुम सीख जाओगे दी शॉर्ट मेथड्स एंड यू विल एबल टू कीप अप्लाइंग देम इन योर होमवर्क प्रॉब्लम्स. And by the time your actual exam comes, you will be very proficient and you will be able to actually think in that manner कि you are able to solve those questions using these techniques in a very fast manner. Majority of students क्या होता है कि my channel is actually very small. मुझे कोई hesitation नहीं है वो admit करने में कि my YouTube channel is extremely small. तो बहुत सारे students को मेरे channel के बारे में नहीं पता होता है and they come to know about me in the very end, like when their JEE mains is approaching. And तब जाके when they learn about these game changer shortcuts, then they regret कि they were not able to use it right from the beginning, because all those tests, all those AITS वगैरह, even in JEE mains, JEE advanced के लिए भी जो भी homework problem solve करते आ रहे हैं 1-1.5 साल, उसमें अगर ये सब methods पहले से ही सीख लिया तो you will be saving a lot of time and you will get very good at it as well. Alright, so this is what you get in this full batch for students starting from complete zero in this batch. Alright, so if you're interested, then I would advise कि enroll as soon as possible because the discount offer will be available only for a limited time. And जो batch 1 और batch 2 में फ़र्क है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ. Batch 1 और batch 2 में content ultimately same to same होने वाला, completely identical. The only difference in the pricing, let me just go to my website. So 2028 के लिए ये 2 बैचेस हैं. बैच 1 का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू बैच 2 बिकॉज बैच 1 में यू विल गेट immediate access to the 3-4 chapters that have already been uploaded. So for those students who want to study at their own speed, मतलब instead of waiting for the lectures to be uploaded in batch 2, जिसको आगे आगे पढ़ना है, जिनके पास ज़्यादा टाइम है, they can go for batch 1 जिसमें kinematics अभी ख़त्म होने वाला है. So calculus, vectors, units, dimensions, ये 3 chapters immediately available हैं and you can just start watching them, all of them immediately. Otherwise, if you're anyway going to start from the beginning and are in no rush, then I would suggest batch 2 is good. It is lesser expensive compared to batch 1 and proper structured flow में जाएंगे and you will also get plenty of time for chemistry and maths. Starting में batch 2, starting में calculus and vectors थोड़ा सा आसान topics है and homework भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, but don't be under the impression कि ऐसे ही आगे रहेगा. Kinematics, Newton's laws में थोड़ा सा homework वगैरह भी बढ़ेगा. So the one thing that I want from your side is consistent hard work. Consistency is the key. रोज 16 घंटे नहीं पढ़ना है, पर just ensure that there is no backlog, all your concepts are clear, all your doubts are cleared, and you're just watching the lecture as it is uploaded, and you will be completely on track. Alright, so if you're interested, make sure that you enroll as soon as you can to get
the discounted prices. I will see you next time, and I will see you in my course.